Hello students, today I have come up with 60 MCQ questions which would be covering your general English syllabus. Randomly, the questions have been designed from different topics. So let's start with the first question. See what we are supposed to do in this question. From question 1 to 5, there are 5 alternatives. You are supposed to choose the best one among the given options. So the first one says, the chairman is ill and we will have to dash the meeting for a few days. Now since a person is ill, आपको मीटिंग को ख़त्म करना है या थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखना है. ओके, सो हियर द बेस्ट वर्ड विच कैन फिल द ब्लैंक इज पुट ऑफ. हमें उस चीज़ को या तो आगे बढ़ाना है या तो उस टाइम के लिए ख़त्म करना है. द चेयरमैन इज इल एंड वील हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग फॉर अ few days. Second, see, I'll be a little fast because we are supposed to cover 60 questions. Wherein explanation is needed, I would definitely be giving. I won't skip that, but then try to increase your pace also. The cat and the dog have enemy in the rat. Dash, अब इस dash में क्या आएगा? कुछ ना कुछ जो चीज़ common है. So here it goes with common. B1. The cat and the dog have a common enemy in the rat. हैव अ सेम एनिमी नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी दिस. म्यूचुअल भी नहीं हो सकता, सिमिलर भी नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी कॉमन. सो विल गो विथ टू बी. थर्ड, ही टोल्ड मी दैट ही डैश वॉचिंग द मूवी. नाउ सिंस इट इज़ वॉचिंग हियर ING इज़ यूज्ड. अब यहाँ पे हमें ऐसा क्या वर्ड लगाना है? दिस इज़ इन सिंपल पास्ट, सो डेफिनेटली ये जो एक्टिविटी है ये भी पास्ट की ही है. And two events of the past जो पहले ख़त्म होता है वो perfect. So we are supposed to use perfect tense. Hence it would be had finished. He told me that he had finished watching the movie. I hope you got the concept. Fourth, he is very good. Now in this one, subject, verb and agreement, आई टोल्ड यू कि गुड है prepositions में किया था. सॉरी, ये जो है ही इज़ वेरी गुड. गुड एट मैथ्स होता है. गुड इन चीज़ों में जब भी हम लगाते वी यूज़ द वर्ड एट. सो इट हैज़ टू बी फोर. सी, ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज. फिफ्थ, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स. मीन्स मैं अपना काम इतना परफेक्टली करती हूँ कि मिस्टेक का कोई भी आसार नहीं है. सो हियर इट वुड बी टू. I do my work too carefully to make mistakes. Now, in the next part, we have questions from 6 to 10. In these questions, we are supposed to choose the word which is opposite antonyms. Okay? हमें word मिला हुआ है, उसका opposite देखना है which is best suitable. So plausible. Now, what is the meaning of this plausible? This is पॉसिबल, फीजिबल, जो भी चीज़ जो रैशनली आप कर सकते हो. द ऑपोजिट ऑफ सच वर्ड इज इम्प्लॉजिबल. सो इट इज सी. फॉर सिक्स्थ वन द आंसर इज सी. सेवेंथ, frailty. Now frailty, what is the meaning? It is condition of being weak and delicate. Let me write the meaning for you. Condition of being weak and delicate. So the opposite of it is strength. So we'll go with 7B. Eighth, the word is genial. Now genial is very friendly person. Friendly, ये as an adjective use करते हैं. Friendly, cheerful. So the opposite would be boorish. Okay, why boorish? Boorish is bad mannered. A person who's not friendly, bad mannered. Ninth, prevent. Very easy word. Prevent होता है किसी भी चीज़ से किसी को stop करना. Stop from happening. So opposite क्या होगा? उस चीज़ को होने देना. So protect नहीं आता है, block भी नहीं आएगा, hinder होता है रोकना. So it would be induce, since we are supposed to do the antonym. So it is induce. Induce is to let happen something. 10th, demolish. Now demolish is what? Demolish is put down या फिर pull
और नॉक डाउन, किसी चीज़ को ख़त्म करना. जनरली ये वर्ड हम कहाँ सुनते हैं? वी हियर दिस वर्ड विद बिल्डिंग्स. द बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड, द स्ट्रक्चर वॉज डिमोलिश्ड. अब इसका उल्टा क्या होगा? उस चीज़ को बनाना. सो इट वुड बी बिल्ड. वील गो विद 10B. Now let's do the 11th question. What we are supposed to do in 11th? Some parts of the sentences have errors and some are correct. You are supposed to find the part in which there is an error. हमने वो part find करना है जहाँ पे कोई error है. So let's start with question number 11. Ram was senior to Sam in college. Now this particular statement has no error. कोई error नहीं है इसमें. So we'll go with D. 11D. Why? Because there is no error in this sentence. Now 12th. Supposing if. अब supposing if आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. It is very clear. Supposing or if we cannot use it together. It has to be suppose. So problem is in the first sentence. Now the sentence goes like, suppose if it rains, what shall we do? 13th. The capital of Yemen is situating. Is situated आएगा. यहाँ पे हमने error पकड़ लिया. So problem is again in the B part. The sentence goes like, the capital of Yemen is situated 2190 meters above the sea level. 14th. It was him who came running into the classroom. Now it was not him, it was he. Okay, so it would be A. It was he who came running into the classroom. 15th, the last one with this pattern. The captain along with his team. Are practicing very hard for the forthcoming match. Now in subject verb agreements we did sentence like this. जहाँ पे भी along with आता है, we goes with the farthest subject. We have two subjects here. The captain is subject 1 and his team is subject 2. We'll go with the farthest one. The capital is singular, so it has to be is. So problem is in the B part. Now the sentence goes like, the captain along with his team is practicing very hard for the forthcoming match. Now let's do the 16th one. What we are supposed to do in the questions from 16 to 20. There are 4 alternatives. We have to choose the one which best expresses the word. That means we are supposed to do the synonyms here. Defer होता है postpone करना किसी चीज़ को, बाद के लिए रखना. So the meaning is, it is clearly given. 16 का D है postpone. We'll go with the D option. 17th, abandon होता है खाली भी करना, हम कहते हैं space has been abandoned, या फिर give up कर देना. To give up completely. Now the best one, the meaning which goes with it is forsake. It is one and the same thing. Forsake का मतलब भी होता है leave, छोड़ना. So it is same. 18th, the word is seize. Very commonly used. Seize कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, या bring to an end. So stop करना किसी चीज़ को. So we'll go with the B option, stop. 19th, cancel करना. Again very simple word, something to be cancelled. The word which goes with it is approve नहीं आएगा, allow नहीं आएगा, break नहीं आएगा. It would be abolish. So cancel, abolish. 20th, pious. Now pious is related with spiritual, religious या फिर spiritual. So the word which goes nearly with the meaning is A. 20A, pious, meaning religious. Now 21. What we are supposed to do in the following sentences, in the following questions. Some parts have been jumbled up. You are required to rearrange these parts which are labeled PQRS to produce the correct sentence. Now before just starting, I want you people to know that here 2 questions are there
which have not been, there's a typing mistake, I would tell you, and we'll not be doing such question क्योंकि इसमें थोड़ी सी typing mistake है. PQRS have been labeled incorrectly. So the first one, in life some rules are, as business they seem almost instinctive, learned so early. Now if I look for the connecting chain, in life some rules are, P, learned so early, rules जो है वो learned so early, so I'll go with PS option. Now if I go for PS, in the A1 I'm not having PS, B में है, C में भी है, and D में नहीं है. Now here let's see कि sentence begin किससे हो सकता है, या तो Q से या R से. If we see the Q sentence, Q is as business, then we have as business. Yes, then after that we'll be having P, in life some rules are. So yes, it is going, R से आप start नहीं कर सकते हो. They seem, if I go with they seem, I cannot start with R, so the correct option is B only. It will go with 21 B. You just have to know the connecting chain, connecting link. All precautionary measures were taken of booths. ओके, ये P पार्ट है. अब प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, कैप्चर द, टेकन टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ्स, किससे कैप्चर करने के लिए, बाय द टेररिस्ट. सो आई वुड गो विद PS. लेट्स सी द कनेक्टिंग चेन. आई हैव ओनली इन C, सो आई गो विद द C ऑप्शन. आई डिडंट रीड द होल ऑफ द सेंटेंस. गॉट इट? अगर वो लिंक आपको पहली मिल जाती है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग होल ऑफ द सेंटेंस. नाउ 23rd, this particular question is wrongly labeled PQRS में problem है, so we'll not do this one. Then we'll go with the next one, 24th. Each culture, here we can do, there's no mistake here. Each culture flourishes, each culture flourishes when it comes own tradition on diet, draw strength from its into. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, if I go with the P, each culture flourishes when it comes into, ठीक है, एक movement है, and then it would be connecting with S. Now I'll go with the PS option. Now PS मुझे D में तो नहीं मिला, C में भी नहीं मिला, B में भी नहीं मिला. I just got in A, so 24A is the correct one. Such type of sentences are to be done in this way only. अगर आपको पता चल गया कि sequence है, कोई proper एक sequence ले लो, और then you can solve it. Otherwise you'll waste lot of time, and this competitive exams demands speed with accuracy. 25th, the concept of death, that it has been reduced as an inevitability, is so ancient to a cliché. Now see here, अगर मैं P रखती हूँ, the concept of death, that it has been reduced to, reduced के बाद आएगा to, तो ये मुझे फिर से PS वाला combination चाहिए, which is there only in B option, so I'll go with 25B. Now let's do the 26th question. What does 26th question says? Women are more likely to give birth. अच्छा, this particular question is also labeled wrongly, so we'll not do this one also. इसमें label में PQRS के options में थोड़ी problem है, we'll not do this one. Let's do the 7th one. Today in the country offers the best connectivity, both Kerala among all states. Now I can also start with R, that Kerala among all states, today in the country. So RP एक option है जो मैं link कर सकती हूँ. So if I go with the option, I just have A, so 27A is the correct one. See how fast we are doing just by reading the sentence. Now 28th. What are we supposed to do in 28th? In each of the following questions, a word is followed by 4 alternatives. You have to choose the option that is most appropriate synonym. Means हमें meaning देखना है, जो उसके nearest होगा, we'll choose that. Now the word is foment. Foment का मतलब होता है किसी को provoke करना. To provoke someone. Provoke क्या होता है? Instigate. So we'll go with D option, instigate. Okay. 29th.
प्लेकेट. नाउ व्हाट इज प्लेकेट? प्लेकेट होता है किसी को तसल्ली देना कि ठीक है, किसी को पैसिफाई करना रादर. तो ओ पैसिफाई वी ऑलरेडी हैव इन द ऑप्शन. सो 29 सी इज द राइट वन. वी गो विद द सी ऑप्शन. तसल्ली देने के लिए द बेस्ट वर्ड विच इज देयर इज पैसिफाई. 30th solicitous. Solicitous is a positive word. अच्छा, इसमें थोड़ी सी अगेन टाइपिंग मिस्टेक है. दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट, दिस इज कंसीडरेट. नाउ कंसीडरेट, DERATE. सॉलिसिटस का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना, ईगरनेस. ओके, सो दिस गोज वेल विथ इट. सो फॉर 30 इट इज D. प्लीज करेक्ट द error which by chance it is a typing error. 31. Now we'll be doing the 31. Okay, 31, the word is adulation. Now what does adulation means? Adulation होता है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर देना. Let me write for you. To praise, excessive praise. Excessive means ज़रूरत से ज़्यादा. So if we see the option, approval नहीं हो सकता, extension भी नहीं. applaud. applause क्या होता है? इसी ना गिव अ राउंड ऑफ applause मीन्स किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो. यू आर cheering someone up, so it is applause. 32. Sordid. Sordid is what? Sordid is involving immoral actions. So इसका जो मीनिंग होगा वो भी it would be opposite only, so it would be dirty. Sordid, the meaning would be dirty. Then we have debunk. Debunk होता है किसी को एक्सपोज करना. किसी ने कोई गलती की है, आप उस चीज़ को एक्सपोज करना चाहते हो. एक्सपोज द फॉल्सनेस. सो द बेस्ट, अच्छा एक्सपोज इज ऑलरेडी देयर. सो 33 A is the right answer. Then we have pick out the most effective words from the given words to fill in the sentence to make the sentence meaningfully complete. The medicines are, अब medicines के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? dash for curing cold. The medicines are proper, no. रियल, नो. इफेक्टिव, येस. हम कहते हैं ये चीज़ बहुत असर करेगी. मेडिसिन के लिए हम हिंदी में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? असर करना. असर करना की इंग्लिश इज इफेक्टिव, सो इट विल गो विथ सी ऑप्शन. देन वी हैव 35. इट वॉज डैश हॉट दैट डे एंड द केबल सफर्ड द बर्न ऑफ द हीट. अब कितनी ज़्यादा हॉट? इट वॉज अनबिलीवेबली हॉट that day and cable suffered the brunt of the heat. 36. Dowry is no longer permitted by law even in, means normal marriages में तो नहीं permit है. even in जो डाल दिया वो conventional नहीं होगा, love होगा. it would be love marriage. okay, then we have 37th. Anita dash of me of a girl I used to know. अब अनीता क्या करती? remembers me, no. अनीता रिकॉल्स मी, रिकॉल नहीं होता, रिकलेक्ट भी नहीं होता, रिमाइंड होगा. अनीता रिमाइंड्स मी, सो इट विल गो विथ डी ऑप्शन. अनीता रिमाइंड्स मी ऑफ अ गर्ल आई यूज टू नो. 38. ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री. अच्छा, अब आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई अगर करते हो तो अप्लाई के लिए आपको जनरली फॉर्मली जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ग्रांट होता है. लीव क्या होती है? लीव आपको ग्रांट की जाती है, सो इट वुड बी ग्रांटेड. ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज ग्रांटेड लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री. नाउ 39th. द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज़. अब गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है वो किसको रिव्यू करते? जो कंपनी ऑलरेडी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज पहले ही एग्जिस्ट कर रही हैं. ओके, सो दोज कंपनीज आर व्हाट? दोज आर मैच्योर कंपनी, सो वील गो विथ मैच्योरिटी. 39 इट इज मैच्योरिटी. 40. अथॉरिटी डैश व्हेन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द मॉरल प्योरिटी ऑफ इट्स यूजर. अथॉरिटी क्या हो जाती है? मीन्स यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड आएगा. वाई? क्योंकि इसके बाद बताया गया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है. अथॉरिटी वेट्स नहीं आएगा. एम्पायर्स इज अ पॉजिटिव वर्ड. प्रिवेल्स, नो. क्रम्बल्स, व्हाट इज क्रम्बल? क्रम्बल इज स्प्रेड इनटू पार्ट्स या फिर ख़त्म हो जाना, ब्रेक हो जाना. सो अथॉरिटी क्रम्बल्स व्हेन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द मॉरल प्योरिटी ऑफ इट्स यूजर. 41. What we are supposed to do here?
Here there are 4 alternatives A, B, C and D. We are required to select the most suitable alternative to fill in the blanks. So देखते हैं sentence कैसे, accordingly we'll be filling it up. The salt spray has gradually dashed the bridge. Now salt spray gradually bridge को क्या कर दिया, salt से related क्या word हम use करते, erode कर दिया है, eroded. Demolish नहीं हो सकता, demolish होता है बिल्कुल ही ख़त्म कर देना. Spoiled we cannot use with the bridge. Ravaged is also not the correct word, it would be eroded only. D option. 42nd. I dash you to keep quiet. ये तो हम बहुत normally English while speaking also in common layman's language also we use. I beg of you to keep quiet. So it will go with A. I beg of you to keep quiet. 43. He stood dash as a rock and faced the challenge. Now it is what comparison is being made. Rock क्या होता है? Rock is quiet, no. Strong, no. Solid, हाँ solid भी होता है. But यहाँ पे he stood solid as a rock we cannot use. He solid, firm as a rock. Firm क्या होता है? एक जगह पे बिल्कुल टिके रहना, हिलना नहीं. So firm. 44. The volcanic dash was the cause of great devastation. Devastation is destruction. Volcanoes क्या होते हैं? Volcanoes हमेशा erupt होते हैं. So we'll go with B option, eruption. The volcanic eruption was the cause of great devastation. 45. Please do not dash an offer made by the chairman. ऑफ़र को आप क्या करते हो? या तो आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो या उसको रिफ्यूज़ करते हो. सो इट विल गो विथ रिफ्यूज़. 45. आई होप थिंग्स आर क्लियर. आई एम बीइंग अ लिटिल फास्ट बट वेयर एक्सप्लेनेशन इज नीडेड आई एम डेफिनेटली गिविंग यू, बट दिस इज द स्पीड विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल. सो 46. He is too dashed to be deceived easily. Deceive क्या होता है? Deceived होता है cheat. So वो क्या है? बहुत समझदार है, काफ़ी ज़्यादा sharp है. He is too intelligent. Modern, it is not necessary कि जो modern होगा उससे आप cheat नहीं कर सकते हो. Strong, it has nothing to do with the body. It is related with mind. So mind को कौन control करता है? The thing which is controlled is intelligence. So he is too intelligent to be deceived easily. 47. He is very dash on meeting foreigners and befriending them. He is very keen. Keen is curious. Then we have what we are supposed to do. A phrase is written in the bold. Each bold part 4 word or phrases are listed below. हमें उसका meaning दिया हुआ है. We have to choose the nearest meaning. Now the कुछ देखो बहुत बार होता है, it is not necessary that you know all the vocabulary words. You cannot load yourself with so many words. So these type of sentences na, they help you a lot in knowing the meaning of the word. Even if you do not know, but you can easily relate with the sentence. The inspector was the inspector was a vigilant young man. Now from this it is a positive word. हमें इतना तो पता चल रहा है कि positive word है. So smart young man, vigilant no. Watchful. Vigilant क्या होता है? One who is very means one who is very watchful, I would say. Watchful young man. 49. She is very discreet. Now discreet, the word which goes with it is, this is a very simple word often used by us. It would be prudent. Next is 50. The flat has been refurbished. अब refurbished किस के साथ हम ये मोबाइल्स के साथ बहुत यूज़ करते हैं. Now refurbished is renovated. Whitewash नहीं होता है, painted नहीं होता, repaired नहीं होता, renovated. Repair किसके साथ होगा? जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए यूज़ करोगे. बट व्हेन यू आर यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, किसी फिक्स्ड एसेट के लिए जब हम यूज़ करते हैं, फिक्स्ड एसेट जनरली बिल्डिंग्स के लिए, तो रिफर्बिश्ड द सेम वर्ड चेंजेस इनटू रिपेयर्ड. सी देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रीड द सेंटेंस. यहाँ पे अगर फ्लैट की जगह मोबाइल होता तो रिपेयर्ड होता. नाउ 51. ही इज़ अ गुड लुकिंग बट insipid young man. Now insipid is one who is lacking the spirit.
So arrogant, no. Unscrupulous, no. Sickly, lacking in spirit. Then we have 52. In the 52nd question, we are supposed to look for the item, look for the word which is the opposite in the meaning of the bold words. Please do not be in rush. ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में don't read the question only. यहाँ पे हमने मीनिंग नहीं ऑपोजिट देना है. एंड सी दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट. वो आपको हर तरह के वर्ड्स देंगे जो मीनिंग ऑपोजिट भी है, जो सिनोनिम भी है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. You are advised to show clemency. Now clemency is mercy. Mercy, kind, कुछ भी आप बोल सकते हो. Now the word mercy is already given, है ना. mercy तो दिया हुआ है, but we'll not go with this one because we are supposed to go for the opposite. Leniency, mercy को opposite is never the leniency. Kindness भी नहीं आएगा. Here it would be callousness. Why is it so? Because it is unkind, the exact opposite of clemency. Now 53rd, he is showing signs of senility. Senility क्या होता है? Senility is like with the passage of time, with the passage when you achieve a certain age, आप जो है अपने सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं आपके वीक हो जाते हैं. कोग्निटिव चीज़ें, कोग्निटिव इज माइंड, हाँ, वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी इन द वे ऑफ लाइक कम होना शुरू, आपको सुनना कम हो जाता है. सो दैट पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज सेनिलिटी. द ऑपोजिट इज वेरिलिटी. वेरिलिटी क्या होता है? दिस इज मार्क्ड बाय स्ट्रेंथ. सो एग्जैक्टली द ऑपोजिट. सेनिलिटी इज बेसिकली मेच्योरिटी. ओके, now the opposite is virility. 54th, the task assigned to him was arduous. Now arduous, what is arduous? It is very difficult and time consuming. कोई भी चीज़ जो difficult है, time consuming है. The opposite would be definitely easy. No other option. Easy. Now 55. अच्छा 55 we have throughout the evening. See here by mistake every word has been made into bold, but actually only this is the word which is supposed to be in bold. So doleful. Throughout the evening Rahul looked very doleful. So doleful is sorrowful. आपको सेंटेंस पढ़ के इतना तो पता चल रहा है. अगर आपको सपोज करो मीनिंग नहीं पता कि क्या होता है डोलफुल, एटलीस्ट यू नो दैट दिस इज अ नेगेटिव वर्ड. पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव है, तो इसका जो ऑपोजिट आएगा वो पॉजिटिव आएगा. नाउ एग्रेसिव इज नेगेटिव, नहीं आ सकता है. चेयरफुल पॉजिटिव है. टायर्ड इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड. इन्वॉल्व नो, इट इज़ नॉट गोइंग विद द ऑप्शन, सो इट वुड बी चेयरफुल. गॉट इट? एक हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड आप कर लिया करो. कभी कभी आपको मीनिंग नहीं भी पता है, स्टिल यू कैन गो विद द ऑप्शन इफ यू रीड द सेंटेंस ओनली व्हेन यू आर प्रिटी श्योर. Now pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete. You must dash your career with all seriousness. हम इसमें क्वेश्चंस एक एक आपको ऑप्शन देख रहे हैं. यू मस्ट डायरेक्ट योर करियर. देखो करियर हमेशा हम क्या करते, कंप्लीट की, और करियर को कभी कंप्लीट नहीं करते, करियर को फॉलो नहीं करते. वी ऑलवेज परस्यू द करियर. सो यू मस्ट परस्यू योर करियर विथ ऑल सीरियसनेस. Next, 57th. 57 says freedom is not a dash but our birthright. Means कोई भी freedom जो है वो आपका birthright है, कोई आपको gift में नहीं दे रहा है. Sin is what? Sin पाप को कहते हैं, so it is nowhere related. Farce, no. Illusion, no. It is a gift. So freedom is a gift. But freedom is not a gift but our birthright. Now 58. Where is 58? It would be here. My father keeps all his dash papers in lock and key. अब lock and key, what it is related to? See, lock and key. Required, let's see the options. Required papers, no. Necessary papers, useful, no. Confidential, yes.
आप किसी भी चीज़ को अंदर लॉक इन की करके कब रखते हो? व्हेन इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, समथिंग विच इज़ नॉट टू बी शोन टू others. Now here what we are supposed to do, we have to, there's a part which has been italicized और हमें उस पार्ट को देखने के हम उसे और ठीक कर सकते हैं या इट इज़ परफेक्ट. सो इटैलिक्स में तो नहीं है. आई वुड जस्ट अंडरलाइन द वंस विच नीड्स टू डू. ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट, सो वील गो विद दिस वन. इसकी जगह अब आपको देखना है वेदर इट इज़ द बेस्ट सूटेड वन और यू कैन रिप्लेस इट. All the allegations leveled against him were found to be baseless. Let's see. All the allegations leveled for him, no. Leveled with him, नहीं. Leveled against him were found to be baseless. अब level against जो है, ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट, बट यहाँ पे leveled against ही आएगा. Why? Because the second part is again past, were found. ठीक है. सो हियर इट वुड बी नो इम्प्रूवमेंट. अगर यहाँ पे इज आता वर्क की जगह तो आप सी ऑप्शन को चूज कर सकते थे. 60. सी टेंस इज सो इम्पॉर्टेंट. पीपल आर टायरिंग वेरी सून इन एन एक्टिविटी विच दे डोंट लाइक. नो पीपल, यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन है दैट इज अ टायरिंग. आपको टायरिंग का एक रिप्लेसमेंट देखना है या फिर यू फील इट इज ऑल करेक्ट. सो पीपल आर tried very soon, no. People are trying very soon. The word is tired. Yes, people are tired very soon in an activity which they don't like, so it will go with C option. So I am through with all the 60 questions. I hope this video was helpful. All the best for your exams. Keep watching the video and post comments. Your comments are really helpful. Thank you so much, students.